keep yourself on mute unless and until you are asked to just speak on some topic. Okay, so if you want to talk, if you want to say something, you will be allowed, but rather than that, it will be better if you interact more on more through the chat box, because once so many people are talking all together, it won't be audible for the people. Okay, it won't be giving a kind of clarity. मैं एक बार हिंदी में भी दोहरा देती हूँ। मैं अनुपम मिश्रा आप सबों का स्वागत करती हूँ एलन करियर इंस्टीट्यूट की तरफ से। Excuse me, ma'am. यस प्लीज़ Your ऋषभ, डू यू volume is very low. okay, that's why I asked in the beginning, please let me know if my voice is clear or not. Is that only for one parent, or for everyone my voice is low? Then I will just do something for that. Mom, I also can't hear you. Okay, let Yeah, me voice check. is low actually. Okay, okay. Thank you so much for letting me know. Now I am working on that. Now I hope that it is clear, as I have taken the mic closer to me. So, am I clearer now? Better. Okay, thank you so much. So, okay. Okay. So, the parents are still joining, but our session starts from 4 p.m. and we have to start by right now only, because it might be possible that you are coming to know so many things that you have ignored in the beginning. Okay, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे सामने हो के भी हम समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम उन छोटी छोटी बात चीज़ों के बारे में भी बातें करेंगे, और उसके साथ साथ हमारा जो अपना एलन करियर इंस्टीट्यूट है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम किस तरह की एकेडमिक्स की बात करते हैं, किस तरह की नर्चरिंग की बात करते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस सेशन. एंड ओके, सो the whole session will be on record, so whatever you are stating, whatever we are doing over here, it will be recorded. So once again, I Anupam Mishra welcome you all for this parenting session, and let's start it with the full charm, full energy, and try to learn as many things as we can. Not learn actually, yes, of course, it is said that every parent has a different way, unique way of handling their kids. आप जिस तरह से अपने बच्चों को हैंडल करते हैं, जो तरीका आप अपनाते हैं, वैसा कोई और नहीं यूज़ करता है. तो आप कहीं भी किसी भी जगह से ये नहीं सीख सकते कि अपने बच्चे को कैसे हैंडल करना है. येस, ऑफ कोर्स यू माइट कम टू नो अबाउट अ फ्यू वेज, जो तरीके हैं जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं, जो सबसे ज़्यादा बच्चों पे काम करते हैं, जो कुछ क्लासिकल वेज़ हैं जो आज तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन वेज़ को अभी कैसे हम उनसे पीछा छुड़ा सकते हैं. जो हमारा कंप्लेनिंग नेचर है कि हमारे बच्चे नहीं सुन रहे हैं, हमारे बच्चे ये नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं, हमारे कहने पे नहीं चल रहे. सो व्हाई इज़ दैट सो, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट. सो आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू अ लिटिल बिट on psychological basis. Okay, so let's start with the session and I am putting it on record. Okay, it's already done. सो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगी अपने एलन करियर इंस्टीट्यूट जिसने ये पेरेंटिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया है. वी ऑलवेज बिलीव इन दिस थिंग दैट टुगेदर वी मेक अ डिफरेंस. ओके, तो एज अ टीचर ओनली वी वोंट बी एबल टू हेल्प यू आउट. ठीक है, हम अगर फैकल्टी मेम्बर की बात करें, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू पुट योर सेल्फ ऑन म्यूट unless and until you have to say something. You can raise your hand and of course I will allow you to speak and I will love to listen from you all as well. तो आप सब बोलने के लिए आज़ाद हैं, जब चाहें आप अपनी बात हमारे सामने रख सकते हो, बट अभी सब अपने आप को म्यूट पे रखिए ताकि सबको सुनने में सहूलियत होगी. ठीक है, तो मैं एलन की बात कर रही थी. एलन या किसी भी अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द टीचर्स हु आर गोइंग टू हैंडल द किड्स ऑन देयर ओन, इट्स ऑल्सो अबाउट यू एज अ पेरेंट. तो हमारी पेरेंट्स की जिम्मेदारी अगर हम समझ जाएं तो yes, together we'll be able to make a difference. So let's start this journey of understanding each other, to know the responsibilities of each other, so that we'll be able to make a difference. So let's start with this session today, and I hope that you will be able to learn so many things. But before starting with the session, I would like to tell you a little bit about Allen Career Institute, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि आप किसका सेशन अटेंड कर रहे हो और क्यों कर रहे हो. एलन करियर इंस्टीट्यूट आज के डेट में इंडिया का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट है. और क्यों है उसकी स्टोरी मैं थोड़ी सी आपके सामने शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये जो है
आईआईटी जी का भी प्रिपरेशन करवाता है, मेडिकल के लिए भी प्रिपरेशन करवाता है, और सिर्फ प्रिपरेशन नहीं करवाता है, हमारे बहुत सारे बच्चे अभी जैसे मैं मुंबई सेंटर से आपसे कांटेक्ट कर रही हूँ, सारे सेंटर्स इनके हैं, इनमें रैंक 100 में एक से एक बच्चे आते हैं। तो उनके कुछ रिकॉर्ड्स भी हैं, आई वोंट बी शेयरिंग ऑल द रिकॉर्ड्स विद यू राइट नाउ, बट येस एटलीस्ट आई कैन टेल यू अ ब्रीफ अबाउट कितना हमारा बच्चा आगे निकल रहा है, कितना अच्छा कर रहा है, और हम अपनी तरफ से कितना प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो फोकस है वो उनके नॉलेज के फाउंडेशन को बनाना है, कि सिर्फ सिखाना नहीं है, बताने को तो आप बताते हो ना कि सारे इन्फॉर्मेशन दे आर अवेलेबल ऑन गूगल, विकीपीडिया, इन्फॉर्मेशन तो सब कुछ अवेलेबल है, बट द वे वी आर प्रोवाइडिंग दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, एंड इट्स ऑल्सो नर्चरिंग देयर वैल्यूज़। तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ वैल्यूज़ भी प्रोवाइड किए जाते हैं, संस्कार दिए जाते हैं। आई एम वेरी सॉरी, आई गेस दैट समवन हैज़ नॉट टेकन माई thing, and Saksham Mittal, I would request you to put yourself on mute. Okay. Yes, the best academic support and personal care हमारे पास अगर आप बात करें तो आईआईटी या जी के प्रिपरेशन के लिए या मेडिकल के प्रिपरेशन के लिए देर आर डॉक्टर्स एंड ऑल्सो द पीपल हु आर ऑलरेडी डूइंग लाइक डन अ लॉट ऑफ रिसर्च इन देयर कैटेगरी। जिस भी एरिया की बात करें वहाँ सब अपने अपने लेवल पे दे हैव रियली अचीव्ड अ लॉट एंड देन दे आर ट्रेनिंग द किड्स। सो उसके लिए हम एकेडमिक सपोर्ट भी देते हैं, पर्सनल केयर भी देते हैं बच्चों के लिए। ओके, देन द कोर वैल्यूज़ ऑफ डिटर्मिनेशन, ऑनेस्टी, ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी, इतने सारे वैल्यूज़ जो मैं भी बात कर रही हूँ कि सिर्फ हम एकेडमिकल नॉलेज की बात नहीं करते, वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द काइंड ऑफ इंटीग्रिटी एंड ह्यूमनिटिज्म, होलिस्टिक लर्निंग, सोशल एथिक्स एंड कंसर्न फॉर सोसाइटी। तो जितनी भी वैल्यूज़ की आप बात करते हो, टाइम टाइम पे अगर आप हमारे पहले के बच्चों से भी मिल सको तो विल कम टू नो अबाउट ऑल द थिंग्स दैट वी हैव बीन डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। हाईली क्वालिफाइड एंड मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ जो कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, वैल्यू बेस्ड करियर एजुकेशन, उसके बाद abundant resources that we provide in the form of LN modules or the kind of time to time test series and all, individual attention of the students through the mentorship program, and providing a lifelong connection to ethics and excellence in global leaders। तो ये तो हो गए जो हमारे करते हैं हम। अब हिस्ट्री की बात अगर करें कि एलन की शुरुआत कैसे हुई, देखिए आप जिस भी चीज़ से जुड़ते हो उसके लिए जानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। पेरेंटिंग सेशन की अगर हम बात करें तो यू विल बी एबल टू get my points only when you know that how much we have worked in this area। ओके, तो जब हम हिस्ट्री की ऑफ एलन की बात करते हैं कि एलन का इतिहास क्या है, एलन ने शुरुआत कब की है, तो एलन वॉज फाउंडेड बाय श्री राजेश महेश्वरी इन 1988। जस्ट सी, एंड ही हैज स्टार्टेड विथ 8 स्टूडेंट्स, 8 बच्चों के साथ उन्होंने शुरुआत की, और आज आप देख सकते हो कि इसकी हिस्ट्री में कितने मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड इवन फैकल्टीज़ आर इन्वॉल्व्ड। और ये के जी वैष्णव ने भी, ओके, के जी वैष्णव ने भी इसके लिए असिस्ट किया, एंड देन बोथ ऑफ देम हैव स्टार्टेड विथ दीज ऑल सेशंस। ओके, सो द इंस्टीट्यूट अचीव्ड रिमार्केबल लैंडमार्क 12 सेक्शंस इन जस्ट राजस्थान पीएमटी इन द ईयर 1991 में इनको 12 सेलेक्शंस मिले थे। उसके बाद फर्स्ट रैंक राजस्थान पीएमटी 1995। सिंस देन एलन इज़ नोन टू क्रिएट नेवर बिफोर बेंचमार्क्स। ये तो मैं एक बस जो उनके एग्जाम्पल सेट किए हुए हैं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर इट विथ यू एज एन एलनाइट। ओके, स्टूडेंट बैक द ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक्स इन बोथ जेई एडवांस 2014 and All India PMT 2014. In 2016, Alan broke its own stupendous records of previous result, becoming the first ever institute of the country to produce all India rank in both JEE Advanced and NEET UG from classroom. तो ये सब details है that you can also get on the website of Alan, but I am sharing it with you so that you will be able to correlate with what this institute did and how much it has really worked till date. So this is the history of Alan, and I am proud to tell that I am an Alanite. I am working for Alan. Okay, so you can see this is again available on website. You can check, and these are the true details. Like for more than 35 years, if it is running, it has reached so many students and the faculty members, and so many people have trusted it. This is the record which was created by Allen Career Institute in the year 2017 on 15th of August. You see, these are the 2 records created recently, in which on one roof there were so many people standing all together, students standing all together, and it was the first time it has happened. So many people which showed their love for Allen.
under one roof. So this was a kind of record created by Ellen on the same day. Now, yes, of course, I guess that you have got a brief intro about Ellen. Now, देखिए, आप अगर किसी से भी बात करते हो, and when you know the kind of authenticity of that person, you are able to take the words more seriously, isn't it? So that's the reason before starting with the session, I talked about Ellen Career Institute, so that you will be able to take in my points more seriously, and you will be able to know that who is speaking. I myself have an experience of 15 years in teaching, and if you talk about, I have been in almost all the best schools, if you name, of Navi Mumbai. So it's not the kind of thing that I want you to know right now. It's just that if you are listening to someone, you need to know the authenticity of that person, isn't it? So let's start with effective parenting. Effective parenting in itself is a vast term. मतलब इसके अंदर बहुत चीज़ें आती हैं, और ये एक घंटे में संभव नहीं है बिल्कुल भी कि आपसे बातचीत करना कि बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम है. हो सकता है कोई एक ही प्रॉब्लम हो और जिस पे हम अटक जाए, जिस पे ज़्यादातर पेरेंट आज प्रॉब्लम में हैं और दे आर रियली फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन हैंडलिंग देयर किड्स, इजंट इट? सो the first question what I'll be asking you, who you are. Yes, of course I know that you are a parent and that's why you are here. You want your child to excel, you want your child to do the best in his or her life, but I want you to write it in the chat box now, who you are. What will be the definition of yourself that you'll be giving? Who you are. I request everyone who is present in this meeting, I guess there are 35 people at least, because two of us are admins, so please let me know who you are. How are you going to define yourself? क्योंकि अगर हम अपने बच्चे को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने बच्चे को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हम कौन हैं. So how are you going to define yourself? Am I clear to everyone? Because I have been asked by someone to go a little slow. Okay? I hope that I am audible, I am clear, and also okay. Thank you so much, Vasudha. Human being with responsibilities in hand. Thank you so much. Okay, so I'm getting such a kind of great responses from the parents, and that's it, how we are going to define ourselves as a parent. तो यहाँ मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि आप अपने आप को कैसे डिफाइन करते हो एज अ पेरेंट. ओके, वी आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ आवर चाइल्ड. ग्रेट, ग्रेट, वेरी गुड. आई एक्सपेक्टेड दिस सॉर्ट ऑफ आंसर्स फ्रॉम द पेरेंट्स, क्योंकि अगर ये हम नहीं जानते एक ने लिखा पापा, a positive person, a best. Advait, yeah, actually I have asked you to write in the chat box. Please do that. I will allow you to talk if time permits us, because there is a lot to share, and of course I will ask you also to raise questions if you have by the end, but please stick to the chat box so that we will be maintaining a kind of decorum of this meeting. Okay, I hope that you will be able to empathize with the trainer. Thank you so much. Thank you so much everyone for sharing your responses. Yes, of course, we do need to be the best friend or a kind of facilitator. Ma'am, excuse me, ma'am. Yes, please. Ma'am, your voice is a bit low. Can you speak a bit louder? Ma'am, actually I asked it several times and I hope that I am using my loudest voice, and please check your device as well. I would request, because I am using it appropriately, ma'am. Ma'am, because my device speaker is 100 volume. Ma'am, I am using the full voice of mine as well. I'm very sorry for that, ma'am. I cannot increase the volume anymore. I'm actually speaking very loudly than my normal volume. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. So yes, of course we can go ahead with this voice. So my first question was that who you are, and next, why are you here? Again, this question is related to the last one where you said that who you are and why do you want to be here. The only reason behind that is I am answering from your perspective only, that you really want to get the best of your child, isn't it? I hope that this might be the reason of everyone. जैसे हम पेरेंटिंग सेशन की बात करते हैं, तो पेरेंटिंग में वही लोग आते हैं जिनको अपने बच्चे से सबसे अच्छा रिजल्ट चाहिए, isn't it? So what are your expectations from this session? जब हम किसी भी सेशन की स्टार्ट करते हैं तो हमारा ये भी एक मतलब एक्सपेक्टेशन बन जाता है कि इस सेशन से मुझे क्या मिलने वाला है, एंड आई होप दैट आई विल बी एबल टू गेट टू एटलीस्ट दैट पॉइंट with which expectation you have entered in this meeting. So with this positive hope, let's proceed. What are the expectations from your child? अभी तो ये पहला वाला एक्सपेक्टेशन आपका सेशन से रिलेटेड था, जिसका आंसर मैंने खुद दे दिया, क्योंकि वो वी कैन नॉट चेंज. ओके, जो भी एक्सपेक्टेशन है आपके, वो समय के साथ आपको पता चलेगा कितना है, कितना मिला है.
But when I ask you what are the expectations from your child, because इसके through ही we will be able to have our further communication in this session. So आपका अपने बच्चे से क्या expectation है? Please write it in the chat box. I request you all to please just write in brief. एक sentence में भी आप बता सकते हो कि आपका अपने बच्चे के साथ क्या expectation है. I at least want one or two answers so that I can move ahead. Please. Okay. What do you expect from your child? आपको अपने बच्चे से क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं? Thank you so much. Yes, to be honest, and very good. Yes, this is the real attitude of the parents, what is required in the current scenario. We only want our child to excel in everything. मतलब वो excellent कर रहा है तो मेरा बच्चा भी excellent होना चाहिए, उसने उतना achieve किया तो मेरा बच्चा भी achieve करना चाहिए. When we are coming with only this kind of expectation, then we are actually pressurizing our child and then developing the stress of our child. Okay, so we first need to understand what our expectation, और जो भी expectations हमारे हैं उसको अपने बच्चे पे force नहीं करना है. Now अभी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसे ही आप इस सेशन में हो, इसका मतलब यही है कि देयर इज़ समवेयर वेयर पेरेंट्स टू नीड टू चेंज. ओके, हम हमेशा कहते हैं हमारे बच्चे को बदलने की ज़रूरत है, उसको कुछ समझने की ज़रूरत है, बट कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है. तो वो कौन सी जगह हैं जिसमें बच्चा भी स्ट्रगल कर रहा है एंड ही वॉन्ट्स द असिस्टेंट ऑफ द पेरेंट्स. सो लेट्स सी दैट. अच्छा, एक नया क्वेश्चन आपके लिए है एंड आई वॉन्ट एवरी पेरेंट टू आंसर टू दिस क्वेश्चन. व्हाट इज़ द थिंग और पर्सन विथ विच यू कैन कंपेयर योर चाइल्ड विथ? ऐसी कौन सी चीज़ होगी जिससे आप अपने बच्चे को कंपेयर कर सकते हो? प्लीज़ लेट मी नो, बिकॉज दिस क्वेश्चन विल डिफाइन दैट what you really think about your child. Okay, thank you so much. Okay, Renu ma'am, I appreciate your answers. Wow, Path's parent, great. So I'm getting the ideal answers, all the ideal answers. Yes, of course. Very good. Yes, we need not to compare our kids with anyone else. That's the, like you can say, the worst problem of the parents. What they do since beginning, अगर हम अपने बचपन की भी बात करें तो एवरी टाइम वी हैव वर्ड कि हमारा कंपैरिजन दूसरों के साथ किया जाता है. एंड वेन एवर वी आर कंपेयर्ड, in that case either we feel superior or inferior, and both the things are actually going to kill your inner talent. either you feel अरे मैं इससे बेहतर हूँ या मैं इससे बेकार हूँ, इसके कंपैरिजन में, then of course you are not moving ahead. You have accepted one identity and you are just moving on that. Okay, yes, both need changes. Thank you so much. How much rating will you give your child for his or her values on a scale of 1 to 10? Now here this answer you don't need to give. It's for you to understand कि आप अपने बच्चे में कितना वैल्यूज़ देखते हो, किन किन चीज़ों को अप्रिसिएट करते हो, उनके कौन कौन से स्ट्रेंथ और वीकनेस हैं जिन पे आपने काम किया है या कर रहे हो. Okay, ask yourself, do you really need any coach in your life? This question is actually for you because you are having this session and we all need a coach in our life, you know. अगर आपको लगता है कि हमारे लिए कोच की आवश्यकता नहीं है, then I can explain you, because we all do need a coach in your life, a motivation in life. कोच से मतलब है एक motivation, एक inspiration that help you to go ahead. जैसे अगर हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करें, we all know the restraints, the constraints of this classroom. We are not able to physically manage the classroom. और उसकी वजह से क्या होता है, बच्चा आज जो कभी क्लास में हो सकता है कि बहुत कॉन्फिडेंटली बोला करता था, वो भी सोचता है मैं बोल के क्या फ़ायदा, वैसे भी इतने सारे लोग हैं या इतने लोगों को बोलने का ये मिलेगा. सो कहीं ना कहीं वो फिजिकल टच की वजह से बच्चा अपना इफेक्टिवनेस नहीं दे पा रहा है. ओके, सो देयर आर द प्लेसेस वेयर वी नीड टू मोटिवेट आवर चाइल्ड. इंडिविजुअल मोटिवेशन इज़ रिक्वायर्ड एंड आई प्रॉमिस as an Ellen faculty that we individually motivate each and every child of ours. Okay, अभी अगर हम पहली चीज़ पे बेसिक से स्टार्ट करें पेरेंटिंग की, तो जब हम कुछ भी खरीदते हैं अपने लिए, या तो गाड़ी खरीदो, कोई भी मशीन खरीदो, कैमरा खरीदो, वो एक मैनुअल के साथ आता है. डोंट वी गेट इट विद अ मैनुअल, एनीथिंग दैट यू बाय, isn't it? But do we get such sort of manual when we have our kids? No. Okay, so this manual we are talking about, जब हम
पेरेंट बनते हैं, एट दैट टाइम वी हैव सो मेनी थिंग्स टू नो अबाउट, लाइक मैं बच्चे के लिए क्या करूं जिससे बच्चे का पोटेंशियल यूज़ हो पाए, जिससे बच्चा हमारा किसी भी जो भी वो कर रहा है उसमें एक्सेल कर पाए. तो वी ऑल लाइक एज अ पेरेंट, कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं होता है जो अपने बच्चे के लिए अच्छा ना सोचे. तो अगर हम बच्चे के लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं, बच्चे के लिए अच्छा चाह रहे हैं, तो उनके लिए कोई एक मैनुअल की ज़रूरत कभी आपको पड़ी? बी ऑनेस्ट एंड टेल मी जस्ट येस और नो. डिड यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ कोच और मैनुअल? अब मैं भी एक पेरेंट हूँ, आपको बता दूँ. अभी तक तो मैं बता रही थी फैकल्टी है, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ. माई एल्डर वन इज़ इन 9th grade एंड येस ऑफ कोर्स आई डिड फील एट टाइम्स दैट आई नीड अ मैनुअल. Thank you so much, Krishna's parent. I guess that all the names are kids' name because we have been dealing with kids for so long. So please forgive me if I'm just telling you beta or just addressing you as the name that is mentioned over here. Yes, it is required. That manual is required. Sometimes that assistance is required. So that's the reason in the PTM and all, when you meet your teachers, at that time teachers advise you this is required for your child. And yes, of course, many of the parents really follow those things. And when they follow, together we are able to make a difference. Isn't it? ओके, सो लेट्स कम टू द प्रॉब्लम्स नाउ. जैसे ही हम सेशन की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना. सो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर दैट यू जनरली फेस विद योर किड्स? प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू फेस व्हाइल डीलिंग विद योर किड्स? Yes, I request everyone to share the problems that you face while dealing with your child. बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मैंने यहाँ कुछ 10 प्रॉब्लम्स लिख के रखे हैं, बट आई वॉन्ट यू टू टेल व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग while dealing with your child. I'm waiting for your response. And yes, of course, you know that when the interaction is there, when you also participate, then it becomes much more interesting. अगर सिर्फ मैं बोलती रहूँ और आप participate ना कर पाओ तो monotonous हो जाता है. And of course, I am sorry, I would be able to allow everyone to speak over here क्योंकि फिर वो chaos हो जाएगा. So please understand our situation and write it in the chat box, whatever feelings or sharings you have to do. Okay. Thank you so much for all your suggestions of your problems that you're talking about. And the biggest problem that we have is, of course, related to internet and the addiction of social media. Isn't it? Yes, that's the problem of most of the parents. But I have taken a few of the points, what I will be sharing in this session, what we will be discussing over here in brief. Not paying attention. Isn't it? Like you say something and your child is not paying attention. आपने कुछ बता दिया and child believes that what he has done is right and he doesn't need to listen to you. होता है ना आप लोगों के साथ ऐसा? Doesn't it happen? Yes. कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि क्लास चल रहा होता है और बच्चे क्लास छोड़ करके कहीं और चैटिंग में लग जाते हैं. Isn't it? यहाँ तक कि जो हमारे ये चैट बॉक्स हैं, there also they start communicating with each other. So this is a kind of you can say a kind of concerning thing for the parents where they believe that their kids are not paying attention. अब क्या रीज़न है इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ में एक छोटा सा तरीका बताऊंगी with which you will be able to get the attention of your kids. Okay? Not ready to listen. उसी से रिलेटेड है. आप कुछ भी कहो सुनने को तैयार नहीं है, जो मन में बना लिया बस वही करना है. Okay? Arguing after every instruction. Again, this is related, interrelated concepts, things. मतलब आपकी बात सुनी नहीं है, आर्ग्यू करने के लिए तैयार है. तो these are the common and general problems majorly with the teenagers. अभी तो बच्चों में भी, छोटे बच्चों में भी होने लगा है, but generally with the teenagers these are the common problems. Then whining and complaining every time. ये हम toddlers की बात कर सकते हैं या mid scholars की बात कर सकते हैं जो कि whine और complain करते रहते हैं हर टाइम. Aggressiveness, yes, teenager, क्योंकि आपको भी पता है कि वो कुछ फिजिकल चेंजेस की वजह से भी, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी एग्रेसिवनेस लेवल थोड़ा बढ़ जाता है एंड देन दे आर नॉट एबल टू टेक द थिंग्स एज सीरियसली एज वी वांट देम टू टेक. पुअर ईटिंग हैबिट्स, ये भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कई बच्चे इस एज में अपना हेल्थ बिगाड़ लेते हैं. जनरली टीन एज, वही एज जो शिफ्ट वाला चीज़ होता है, जो फिजिकल चेंजेस वाले एज होते हैं, उसमें बच्चे थोड़े पुअर ईटिंग हैबिट्स डेवलप करते हैं. इसके ऊपर भी अगर मैं बोलना शुरू करूँ तो इट्स ऑल अबाउट इमोशंस, हैंडलिंग द इमोशंस एंड टेकिंग केयर ऑफ द इमोशंस ऑफ योर किड. ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हमारे लिए भी होता है. जो हमारे रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स बनते हैं, दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू आवर ब्रेन, क्योंकि हमारा ब्रेन को चाहिए एक पार्टिकुलर फीड. ओके, उसको हमेशा वो चाहिए जो उसको पसंद है. तो उसको पसंद में क्या होता है, वो
पसंद की चीज़, जो उसको इमोशनल पसंद की चीज़ अगर नहीं मिल पाती है तो खाने में वो चीज़ ढूंढने लगता है. इट स्टार्ट्स को रिलेटिंग योर इमोशंस विद द थिंग दैट यू लाइक. जैसे आप सेलिब्रेट करते हो तो क्या खाते हो? मिठाइयाँ, है कि नहीं? तो इसी तरह से जब आप मतलब बीमार फील करने लगो, डिप्रेस फील करने लगो, स्ट्रेस में हो, तो आप वैसा ही कुछ ढूंढते हो जिससे कि आपको खुशी लगे. तो आपका जो ब्रेन है ना वो बहुत मतलब कहते हैं ना छोटे बच्चे जैसा ही है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है. दैट ब्रेन शुड बी कंट्रोल्ड बाय आर सबकॉन्शियस माइंड. तो आपको सबसे ज़्यादा अपना सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रॉन्ग करना होगा, देन यू विल बी एबल टू मैनेज ईटिंग हैबिट. तो इसलिए उसके इन डेप्थ में अभी मैं नहीं जा रही, बट आई एम टेलिंग यू दैट इट इज़ ईजी टू बी कंट्रोल्ड, बट दैट कैन ओनली बी कंट्रोल्ड इफ़ यू आर taking care of emotions of your child. Okay, not using the full potential or energy. ये जनरली अभी मैं बताई 15 साल से मैं काम कर रही हूँ, हमेशा पेरेंट्स का इन जनरल 90% पेरेंट्स का कंप्लेन यही होता है कि मेरे बच्चे में पोटेंशियल तो बहुत है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बट ही और शी इज़ नॉट एबल टू यूटिलाइज इट. क्यों नहीं यूटिलाइज कर पा रहा है? कौन सा ऐसा पोटेंशियल है, कौन सा ऐसा रेस्ट्रिक्शन है जो उसको उस पोटेंशियल को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है? सो विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स इन ब्रीफ लाइक लेटर ऑन. शाइनेस और अंडर कॉन्फिडेंस. यस, कुछ बच्चे ऐसा होते हैं जो आप बता रहे हो ना फुल पोटेंशियल है, बट स्टिल व्हेन इट कम्स टू पब्लिक, व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन, दैट चाइल्ड इज नॉट एबल टू गिव द बेस्ट. तो वो शाइनेस क्यों है? वो अंडर, वो बोलते हैं ना कुंठा, वो क्यों है? उसका रीज़न क्या है? एडिक्शन ऑफ टीवी शो, मोबाइल गेम्स, सोशल मीडिया. अब इन चीज़ों का भी एडिक्शन, जो अभी आप लोगों में से सबसे ज़्यादा लोगों ने बताया कि एडिक्शन जो है सोशल मीडिया का या फिर इंटरनेट का, वो एक मेजर प्रॉब्लम है. और कोरोना के केस में तो अभी जो पैंडमिक है इसमें पेरेंट्स सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को फेस कर रहे हैं. दे आर रियली वरीड अबाउट दीज काइंड ऑफ कनेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स. अभी इसका भी कोई भी एडिक्शन कैसे छूटा जा सकता है, क्या होगा, वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन ब्रीफ. तो अगर हम किसी भी एडिक्शन की बात करते हैं, कोई भी एडिक्शन, देर इज़ जस्ट वन रूट कॉज ऑफ दैट एडिक्शन, एंड वॉट इट इज़, वी वॉन्ट टू गेट फ्रीडम फ्रॉम समथिंग. ओके, कोई भी एडिक्शन, आप जिस भी एडिक्शन की बात करो, तो जैसे आप इंटरनेट की एडिक्टेड हो, आप फ्रीडम चाहते हो एकेडमिक से. अगर आपको लगे कि आपका पढ़ाई इतना इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सेल करना है, आपका एम्बिशन इतना इंपॉर्टेंट है, येस ऑफ कोर्स यू वोंट गेट इनटू दैट इंटरनेट. अभी जैसे मैं एज एन एडल्ट आपको बताती हूँ, एडल्ट्स आर ऑल्सो अडिक्टेड टू द सोशल मीडिया, इजंट इट? बी ऑनेस्ट एंड टेल मी, आरंट द पीपल चेकिंग द मोबाइल फोन एवरी मिनट जस्ट टू चेक दैट व्हाट नेक्स्ट मैसेज आई हैव गॉट? यस. तो क्यों क्यों ये एडिक्शन है? और अगर अभी अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, ओके, आई एम ऑन एन ऑफिशियल कॉल राइट नाउ, कैन आई गो एंड चेक माई व्हाट्सएप, व्हाट इज़ द मैसेज? यही चीज़ बतानी है कि अगर मैं अपना सेशन अटेंड करते हुए चेक नहीं कर रही हूँ कि मुझे क्या मिला, कैसे मिला, एंड आई एम एबल टू ओवरकम माई एडिक्शन, द सेम थिंग कैन बी डन फॉर द किड्स एज वेल. वी जस्ट नीड kind of such distraction from internet which will be as powerful as internet. तो हमें बस उसके उस पिन पॉइंट को ढूंढना है, उसके उस इंटरेस्ट को ढूंढना है जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है उसके लिए जितना कि इंटरनेट. और कितने सारे पैशन अभी अगर मैं बताने लगूँ, येस ऑफ कोर्स आई डोंट नो अबाउट यू पेरेंट्स ओवर हियर, बट हमारे पास तो इतने तरीके हैं कि अगर मुझे बोला जाए आई कैन लिव विदाउट मोबाइल फॉर ईयर्स. बस पैसे मिलने चाहिए, काम हो जाए, and I can live without mobiles. Yes, of course, I'm telling you honestly. So it can be in the case of many of the parents who can say, क्योंकि हम मोबाइल से जुड़े हैं सिर्फ अपने काम के लिए. Okay, we are not addicted to it. So if you want to teach our kids also the same thing, we have to show them that what is passion for them, what is more important for them, and we have to understand कि उनका ऐसा कौन सा इंटरेस्ट है जो इंटरनेट के साथ compete कर सकता है. इंटरनेट अपने आप में ही इतना इंटरेस्टिंग है ना, आप जो चाहो आपको मिल जाएगा. कहते हैं ना वो खजाना है, उस खजाने में हर किसी के लिए चीज़ अवेलेबल है, जो आपको चाहिए अवेलेबल है. तो क्यों नहीं कोई भी उसमें जा कर के अपना टाइम लगाएगा, है कि नहीं? सो वी हैव टू फाइंड समथिंग, वी नीड टू बी सीरियस मोर देन द किड्स. और वो अगर आज प्रॉब्लम है, मतलब वो जो प्रॉब्लम में है वो भी उस एडिक्शन से बाहर कर आना चाहता है. अब किसी भी, मैंने बताया ना, कोई भी एडिक्शन है, व्हेन पीपल आर ऑलरेडी इन दैट एडिक्शन दे रियली वांट टू गेट रिड ऑफ दैट, बट इट इज़ much more difficult for them to come out, and they can come out with one thing. इसका एग्जाम्पल मैं इससे देती हूँ, आई लव साइकिलिंग, यू नो, आई गो फॉर लॉन्ग राइड्स एज वेल. तो जब मैं साइकिलिंग के लिए जाती हूँ तो कभी कभी क्या होता है, हवा का रुख अपनी तरफ होता है कि नहीं? और जब हवा का रुख अपनी तरफ होता है ना, तो साइकिल चलाने में जो मज़ा आता है, इट्स लाइक ऑसम, यू फील लाइक इन हेवन. बट जब हवा का रुख उल्टा हो जाता है ना, देन इट्स हॉरिबल, लाइक यू आर नॉट एबल टू पैडल and it's very difficult to move ahead. Same thing goes with our kids as well.
आप उनके लिए वो हवा हैं, वो हवा का रुख है. सो यू हैव टू बी सपोर्टिव टू देम. जब आप उसको बार बार निगेट करने लगो, रेस्ट्रिक्ट करने लगो, तो वो एक ऐसे मोड में आ जाता है जिसको हम रिवोल्यूशनरी मोड कहते हैं. तब वो बोलता है जो करना है कर लो, मैं तो यही करूँगा, तुम क्या कर लोगे. तो हमें उनके प्रॉब्लम को समझना है और बहुत ही टैक्टफुली हैंडल करना है. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय टैक्टफुली, दैट विल बी द जिस्ट ऑफ दिस सेशन विच आई विल बी टॉकिंग अबाउट लेटर ऑन. ओके. Then procrastination, this is the another issue of our students where they keep on procrastinating, like अभी जो हो रहा है उसको मैं बाद में कर लूँगा. तो ये ज़्यादातर बच्चों का होता है. एवरी किड, मतलब आप उनको कुछ बोलो, बोला अच्छा कर लूँगा ना, क्यों प्रॉब्लम करो, अभी है टाइम है, टाइम है. सो दिस इज़ द थिंग, अगेन अनदर थिंग, टाइम मैनेजमेंट की उसी की वजह से टाइम मैनेजमेंट का भी प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू understand their four quadrants. I hope that as parents you are aware about the four quadrants of our time management, जिसमें कि पहला what is based on our priority पे हम किनको रखते हैं, जो कि important भी है और urgent भी है. Then the second priority will come which is really important but it is not urgent, that is coming under the second quadrant. Then the third quadrant where we think that it is important but it is neither important nor urgent. Okay, that can be your games, what the students, for the students if we talk about the games and the other things. And in the fourth quadrant, जो कि आपको लगता है कि अर्जेंट है, जैसे आपका भी बात कर रहे हो, हमारे साथ सेशन हो रहा है, एंड यू इन बिटवीन यू गॉट अ कॉल, व्हाट विल यू डू? इफ़ यू रियली लव दिस सेशन, you will put it on mute, you will just ask the person to give you some time, isn't it? So we know our priorities, what is more urgent for us, what is more important for us, it is only on us, upon us. तो आपको अपने बच्चे को समझाना है कि उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है और अर्जेंट क्या है. दे नीड टू नो द मीनिंग ऑफ इम्पॉर्टेंस एंड अर्जेंसी, एंड देन ओनली दे विल बी एबल टू मैनेज देयर टाइम इफेक्टिवली. तो हमारा इस सेशन में मैं टाइम मैनेजमेंट पे चेक नहीं करूँगी, ये जनरली हम क्लास में सेशंस लेते हैं बच्चों के, मेंटरशिप सेशंस में हम बताते हैं बच्चों के कि वो टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं. हमारे डाउट काउंटर्स भी होते हैं हर रोज़, तो उन डाउट काउंटर्स में भी हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में बच्चों के साथ बातें करते हैं. अननेसेसरी स्ट्रेस डेवलपमेंट, ये भी एक ऐसा बोलते हैं ना प्रॉब्लम है जो पेरेंट्स, अभी कितने भी पेरेंट्स हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं. व्हाट दे थिंक कि हम तो सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने बच्चे को हमने सब प्रोवाइड कर दिया, अब उसको क्या स्ट्रेस होगा. हमारे ज़माने में स्ट्रेस था जब हमें ये नहीं मिला था, इतना प्रॉब्लम था और हम ये नहीं कर पा रहे थे. बट when I am providing everything to my child, what kind of stress he might have? So they are really shocked. But dear parent, please notice this thing. You might not be aware, but every child needs some attention. And as you are, अब अगर आप अपने बारे में सोचो, आपके पास सब कुछ है, पर क्या आप कभी स्ट्रेस नहीं होते? बिना मतलब की चीज़ों का आप स्ट्रेस नहीं लेते? छोटी छोटी बातों को आप मन में नहीं बिठा लेते? तो छोटे बच्चे हैं, they will definitely get those kind of stress. So we are the one as a teacher, as a parent, to help them out, to come out of that stress, that unnecessary stress development, isn't it? So of course we believe that we all understand our role as a parent and as a teacher, and we will move ahead in that manner. Okay, why is my child not excelling like other? That was the first question I had asked you. When you compare your child, you always believe कि अगर उसको प्राइज़ मिला, आपके किसी पड़ोसी को मिल गया, आपके किसी क्लास के जो आपके बच्चे का फ्रेंड है उसको प्राइज़ मिल गया, बट आपके बच्चे को नहीं मिला, बच्चे से ज़्यादा पेरेंट वरी करने लगते हैं, देखो उसको मिल गया तुमको नहीं मिला. और इस वरी की वजह से हम ये नहीं जानते कि हमारे बच्चे पे कितना स्ट्रेस डेवलपमेंट हो रहा है, वो किस तरह के फेज़ में जा रहा है. वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट. वो बताएगा भी नहीं, उसको बताने भी नहीं आता है. तो ये जो फोर्स है ना पेरेंट्स का, ये सबसे बड़ा किलर है बच्चों की आइडेंटिटी के लिए. बच्चों की, आपने बताया ना, कुछ पेरेंट्स ने बताया था कि माई चाइल्ड इज़ यूनिक, आई डोंट नीड टू कंपेयर हिम विथ एनी वन, एंड दैट्स द स्पिरिट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द टीचर्स. वी नीड टू बिलीव दैट आवर चाइल्ड इज़ यूनिक एंड वी डोंट नीड टू कंपेयर हिम और हर विथ एनी वन एल्स. इज़न्ट इट? एम आई राइट? Please tell me, so that I will come to know that whatever I'm telling you are able to get the point and going ahead with me. Thank you so much. What are the obstacles that doesn't let you help your child go with his or her passion? अच्छा, ये क्वेश्चन पे मैं थोड़ा टाइम दूंगी आप लोगों को, and here anyone, I will again ask only one person to speak over here who is really willing to talk about passion. Only one person. Yes, I'm very sorry because we have time limits as well. बाकी जिनको भी कुछ भी कहना है, आप
चैट बॉक्स यूज़ कर सकते हो, आप चैट बॉक्स में प्लीज़ बताइए। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि अगर आप जानते हो कि आपके बच्चे का ये पैशन है, बट स्टिल you don't allow your child to do that, so what is hindering you? I won't give you the general things what the parents think because of which they are not able to allow them to go with their passion. I want to know it from you. तो कोई यहाँ पे आके बोलना चाहेगा कि आप ऐसा क्या प्रॉब्लम होता है बच्चे के पैशन के साथ कि आप उसको उस क्षेत्र में आगे नहीं जाने देना चाहते हो? आई होप दैट ऑल ऑफ यू माइट हैव वॉच तारे ज़मीन पर या फिर थ्री इडियट्स। तो अभी भी वो पेरेंट्स हैं एंड स्टिल विद द सेम मेंटालिटी. सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू पीपल, what is one thing which is prohibiting you from letting your child go ahead with his or her passion? Yes, please let me know. Okay, anyone who is interested to share, please. Okay, thank you so much, Renu ma'am. I would like to know from others as well if people are ready to share something. Renu ma'am says that they have developed habits, not passion by now. I guess that you are talking about mid scholars. Yes, of course. Mid scholars, by that I mean the students who are under teens, like जो teens में भी नहीं पहुंच पाए, जो 12 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए yes, of course, we need to be there to help them decide what they are doing or what they should not do. वहाँ पे भी एक तरीका होता है. कभी भी जब हम बच्चे को असिस्ट करते हैं वहाँ हमारा क्या प्रयास होता है? एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं. अगर कोई बच्चा बटन लगाने की कोशिश कर रहा है, ओके, अब कुछ पेरेंट्स को मैंने देखा सीधा क्या बटन लगा रहे हो, हाथ से छीन लिया एंड दे विल ट्राई टू अनबटन एंड देन बटन दैट थिंग. हाउ डू यू थिंक दिस एक्ट हैज? प्लीज टेल मी. Is it the right action taken by the parent? Tell me just yes or no. Yes, what do you think? Is it the right action taken by the parent? Yes, of course, you are all right. It's not the right action. So what should the parent do? बेटा चेक करो. आई गेस दैट इट इज़ रॉन्ग. आपको बताना भी नहीं है कि गलत है, आपका ओपिनियन क्या है. आई थिंक आपको बताना है आपको लग रहा है ऐसा, हो सकता है आप गलत भी हो. प्लीज़ चेक इफ़ योर बटन इज़ ऑल राइट. दिस विल बी फार बेटर देन वॉट यू हैव डन अर्लियर. ओके, तो यहाँ पे हमें कोई भी चीज़, ये सिर्फ तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ बटनिंग और अनबटनिंग का. किसी भी चीज़ में आप हैंड राइटिंग की बात करो, किसी राइटिंग स्किल्स के, एज अ टीचर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एज अ टीचर मैंने बच्चे को कुछ लिखने के लिए दिया और सीधे ये क्या लिखा है मैं लिख के दे दूँ उसको, विल इट बी द हेल्प फॉर द चाइल्ड? नॉट एट ऑल. आई नीड टू शो हिम वेयर ही हैज़ गॉन रॉन्ग. सो टिल 12 तो पूरा हमें असिस्ट करना होता है बच्चे को, बट जैसे ही वो टीनेज में आ जाता है, I guess that you will be able to believe me, at that point of time the child starts believing that I am not different than you. The child starts making his own identity when he gets into a teenage, isn't it? So when he is a kind of person like us, how will he be ready to accept anything that you are telling? तो उसको आपको उसके आइडेंटिटी को नर्चर करना. और बहुत सारे एविडेंसेस हैं, साइकोलॉजिकल एविडेंसेस हैं जो बताते हैं कि जिन बच्चों की परवरिश आप खुद भी अपने आसपास देख सकते हो, अपने दोस्तों के बीच देख सकते हो, वो लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं जिनकी फैमिली में हमेशा उनको सपोर्ट मिला. यू कैन सी द डिफरेंस इवन इन if you're working in between your colleagues, in if you have your friend circle, you can check it from your circle. So right now when we communicate, we do understand the difference between the parenting of any child. तो जो पेरेंट अपने बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो उसका पैशन है, उसका कोई काम है, then of course the child is able to progress in kind of, you know, that expound in that progress. तो आप अगर अपने बच्चे को अच्छा चाहते हो, अच्छा कराना चाहते हो, देन यू हैव टू रियली हेल्प एंड अंडरस्टैंड हिज पैशन. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द फर्स्ट थिंग. इसके लिए क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं आप में से किसी ने बताया नहीं, तो मैं भी एक दो जो जनरल ऑब्स्टिकल्स हैं वो बताती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर भी आगे का हमारा सेशन होगा. तो यस, जुआरिया, आर यू विलिंग टू टेल समथिंग, मिस्टर और मिसेस जुआरिया? ओके, सो No, ma'am. okay, so I expected that I will get some answer over here. तो पैशन में नहीं जाने का जो पहला रीज़न होता है, एक तो जैसा एक पेरेंट ने बताया, आई डोंट थिंक दैट इट इज़ गोइंग टू हेल्प हिम आउट इन लॉन्ग रन.
ये पैशन अडॉप्ट करके ये आगे अच्छा करेगा। पैशन में क्या हो सकता है? पैशन में कुछ भी हो सकता है। राइटिंग हो सकता है, पैशन में पेंटिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, एनीथिंग। व्हाट स्किल यू आर टॉकिंग अबाउट, एनीथिंग कैन बी अ पैशन एंड इफ योर चाइल्ड वांट्स दैट। अभी के रिसर्च बताते हैं कि एवरीवन नीड्स 1 hour ऑफ मी टाइम, इवन यू एज अ पेरेंट एंड योर चाइल्ड एज एन इंडिविजुअल, एवरीवन नीड्स दैट 1 hour मी टाइम। तो आप अगर समझ रहे हो कि आपका जो बच्चा है अभी उसको पता नहीं है कि वो सही क्या है गलत क्या है उसके लिए, यू डोंट नीड टू टेल। येस ऑफ कोर्स डियर पेरेंट्स, प्लीज एक्सेप्ट दिस थिंग। हमें उनको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे विल बी एबल टू डिसाइड ऑन देयर ओन। ओके, एंड दैट्स द रीज़न ऑफ ऑल द एग्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन अमंग द स्टूडेंट्स, where they're not able to accept what their parents are telling। क्योंकि वो एक, मैंने बताया ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अभी इतने सारे स्टोरीज और एग्जाम्पल्स मैं नहीं रख पाऊंगी अपने एक्सपीरियंसेस से, जिसमें ये बताता है कि अगर आप किसी बच्चे पे जोर देते हो, देन द स्टूडेंट, द चाइल्ड विल कम अंडर रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। और उसके उल्टा मैं आपके अपने कई स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल दे सकती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहे, क्लास में बहुत ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट करते रहे, बट विथ जस्ट अ लिटिल पुश, लिटिल हेल्प, और पेरेंट्स के साथ जो ऐसे सेशंस हुए, उसके बाद दोज किड्स वर रियली एबल टू डू फार बेटर इन देयर लाइफ। और आज तक अभी तक कम्युनिकेट करते हैं कि मैम वी हैव चेंज्ड अ लॉट, वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड बिकॉज ऑफ एलन। So there are many things that we need to remember as parents. I'll be talking about a few tips, few things in brief that we need to remember a few things. And now what are the few things, like as in the beginning we said कि जब हम अपने बच्चे को सब कुछ दे देते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बस हमारा काम तो हो गया, अब हमें कुछ नहीं करना, जितना चाहिए मैंने गाड़ी दे दिया, उसको मोबाइल दे दिया, पैसे दे रहा हूँ रोज, इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला दिया, इतना अच्छा सब कुछ कर रहा हूँ, अब मेरी जिम्मेदारी ख़त्म। That's not the thing, dear parents. That's not really enough. Provide him everything, but still it is not enough. You have to give him that opportunity to struggle as well. You have to give him your time and efforts as well. So nothing is enough in what you talk about the term of materialism and all the things. It is never going to help you out. अभी मैं अगर बताऊँ, एक बहुत ही reputed school में there was a child in 10th grade. I'm talking about the story of about 2017. Yes, at that time that child was in 10th grade and his parent, that means father, was in police department. And what was the gift that he got? That's why I've taken that picture over here. He got a bike and yes, another of his friend got an Apple phone. So just imagine if the kids are getting all those sort of luxuries, they forget what does that mean by struggling, क्योंकि उनको तो सब कुछ मिल गया ना, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी स्ट्रगल के, they have got everything. Sanjay sir, do you have to say something? Dear Sanjay sir, do you have to say something to each one of us? We would love to listen from you. Okay, now point out the behavior, not the child. ये भी एक अलग किस्म की गलती है सारे पेरेंट्स की, जब हम क्या करते हैं, बच्चे को ही बुरा कह देते हैं, ये मेरा बच्चा ना सबसे शैतान है, मेरा बच्चा ना इसको ये करना नहीं आता है, मेरा बच्चा ये हमेशा गलत करता है। So anything that we are talking about, we start pointing on the child. We don't get into the action. So we have to better involved in the process. कहाँ गलती हो रही है, क्यों गलती हो, ये तो मालूम है ना, सबको मालूम है, उसको भी मालूम है उसने गलती किया, उसके लिए ऑलरेडी रिमोर्स में होता है, और आप उस रिमोर्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हो, जिसकी वजह से बच्चा फिर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाता है, जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आपका बच्चा कुछ भी गलत कर रहा है, you have to understand it is not the child who is wrong, it is the behavior, it is the action. And if you want to get rid of that behavior, you have to show your lot of love and patience for your child. और love और patience का मतलब मुझे यहाँ समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि as a parent we have ourselves learned since the birth of our child कि love क्या है और patience क्या है. Any child can be taught. यहाँ पे भी कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा ये नहीं समझ पा रहा, मेरा बच्चा ये नहीं कर रहा. You know, as a teacher we too face this thing. कोई एक ही चीज़ अगर हमें किसी बच्चे को पढ़ाना होता है एंड वी आर रियली वरीड कि मेरा बच्चा ये नहीं समझ पे आ रहा है, तो इसमें बच्चे के समझने का तकनीक थोड़ा बदलना होता है. सो वी चेंज आवर वेज, वी ट्राई टू टीच हिम इन अ डिफरेंट वे. द सेम थिंग गोज विद पेरेंटिंग एज वेल. अगर आप बच्चे को कुछ समझा रहे हो और आपका बच्चा नहीं समझ पा रहा है, आप उसको दूसरे एग्जाम्पल से समझाओ. और वहाँ पे एक और चीज़ जो आप यूज़ कर सकते हो जिससे आपका बच्चा आसानी से समझ में आ जाए,
यू स्टार्ट शेयरिंग योर स्टोरीज रिलेटेड टू दैट. पता है स्टोरीज जो है ना बेस्ट वे है कनेक्ट करने के. अभी मैं बात करूँगी 3 C's के बारे में जिसमें कनेक्ट भी आता है. ओके, कनेक्ट एंड कम्युनिकेट, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़. वैसे 3 C's की मैं बात करूँगी. तो ये कनेक्ट और कम्युनिकेट में जो हम बात कर रहे हैं उसमें स्टार्ट शेयरिंग योर स्टोरीज विथ योर चाइल्ड, योर अचीवमेंट, नॉट जस्ट अचीवमेंट, योर फेलियर्स एज वेल. तो जैसे ही आप अपनी फेलियर्स और उस फेलियर्स के साथ बताना है कि उस फेलियर की वजह से आप क्या समझ पाए. ऐसा नहीं कि सब फिर हो गया और अब मैं उसके लिए दुखी हूँ. नॉट दैट. Because of that failure, what did you learn and how did you move ahead? That is what you have to tell your child. And just believe me, within 2 or 3 stories you will find that your child is so open to you that he will listen to each and everything what was you say. So that is very important. कोई भी जो बच्चा है वो ख़राब नहीं होता. अभी हमने कहा no bad kid, no bad behavior. What we have, सॉरी, नो चाइल्ड इज़ एक्चुअली बैड हु इज़ डूइंग बैड. सो कोई भी बच्चा गलत नहीं होता है, उसके इन्फ्लुएंसेस गलत हो सकते हैं, उसके बिहेवियर गलत हो सकते हैं. और ये बात हम पेरेंट्स अच्छा कौन समझ सकता है. हम जानते हैं कि हमारा बच्चा किसके साथ है. तो सबसे पहले हमारा जो कहते हैं संगति का असर, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द कंपनी ऑफ आवर किड्स. कैसे बच्चों के साथ बैठता है, कैसे बच्चों के साथ इंटरेस्ट दिखा रहा है, क्यों इंटरेस्ट दिखा रहा है. तो वो चीज़ भी आपका जो बताया ना कनेक्शन से ही आएगा. अगर आप अपने बच्चे से कनेक्टेड हैं तो ही वो आपको बताएगा कि वो उस बच्चे को क्यों पसंद करता है, उसके साथ क्यों जाना चाहता है. तो जितना आप कनेक्शन बताओगे उतना ज़्यादा आपके रिश्ते में ट्रूथफुलनेस होगी. ठीक है. तो उनसे अगर आपको कनेक्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करना है तो उनकी बातों को सुनिए, ध्यान से सुनिए. कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ काम करते हुए, आपका बच्चा कुछ आया आपसे कहने के लिए. ओके, एंड एट दैट टाइम यू थिंक रुक जाओ अभी मैं बात करती हूँ. You can do one thing at that time, and that is really very important, which has been suggested by many of the psychologists, कि आप जब अपने बच्चे से बात करना चाहते हो बस 2 मिनट के लिए उसको बोल दो बेटा बस गिव मी सम टाइम. उससे टाइम मांग लीजिए, लेकिन उसको ये मत बोलिए कि अभी नहीं मैं बहुत बिजी हूँ. नेवर से दिस थिंग टू योर चाइल्ड, क्योंकि आप ये चीज़ उसके माइंड में भी फीड कर रहे हो कि जब आप उससे बात करने जाओ तो वो भी आपको ऐसे ही जवाब देगा. सो ट्राई टू रिस्पॉन्ड योर किड वेन एवर ही इज़ आस्किंग फॉर योर हेल्प. आप उसको ये बता दो बेटा प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ी देर बाद हम बात करते हैं इस बारे में, आपको पता है ना मेरा ये काम कंप्लीट करना है. जस्ट स्टेट योर प्रॉब्लम क्लियरली. ये बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे क्या हम आप भी हर एक चीज़ को क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, ऐसा क्यों, किस लिए कहा जा रहा है. सो दैट क्लैरिफिकेशन इज़ रियली रिक्वायर्ड इन पेरेंटहुड एज वेल. और चाइल्ड आपसे एक्सपेक्ट करता है आप उसको एक्सप्लेन करो कि क्या प्रॉब्लम है. और अगर आप एक्सप्लेन करते हो यू आर एबल टू कनेक्ट, बच्चा फिर आपके लिए वेट करेगा. हो सकता है बाद में रिमाइंड कराए आपको कि मम्मा या पापा आपने ऐसा बोला था, अब मैं आ सकता हूँ क्या. ओके. दूसरा चीज़ कॉम्प्लीमेंट मोर. अभी क्या होता है ना, हमारे पेरेंट्स इन जनरल, आई बिलीव कि यहाँ पे जो भी पेरेंट्स हैं वो लोग ऑलरेडी समझते होंगे कि हमें अपने बच्चे को खूबियों को भी देखना है. अगर हम उसकी गलतियों को देख रहे हैं उसके साथ खूबियों को भी देखना है. तो जो भी खूबी नज़र आ रही है, और अगर आज मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे में कितनी खूबियाँ हैं और कितनी खामियाँ हैं, आई कैन बेट दैट यू वोंट बी एबल टू टेल मोर देन 2 to 3 प्रॉब्लम्स ऑफ योर चाइल्ड, इजंट इट. कोई 2 से 3 प्रॉब्लम्स ही आप बताओगे अगर आप अपने बच्चे को बहुत क्लोजली जानते हो. और जो उसकी खूबियाँ हैं, जो पॉजिटिवनेस हैं, वो उससे कहीं ज़्यादा होगी, है कि नहीं. एम आई नॉट राइट हियर, प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ करेक्ट मी, एम आई राइट, येस और नो. क्या आपको नहीं लगता कि आपके बच्चे की खूबियाँ उसकी नादानियाँ से, उसकी गलतियों से ज़्यादा होती है. येस इट इज़. थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी. येस ऑफ कोर्स, दैट्स द थिंग, एंड दैट्स द रीज़न वी नीड टू फाइंड आउट द थिंग्स ऑन विच वी कैन कॉम्प्लीमेंट आवर चाइल्ड. आप उसको शाबाशी दें जो भी चीज़ अच्छा करता है. अगर आपका टॉडलर है तो उसको तो जितनी बार आप उसको पैट करो बहुत अच्छी बात है, उसको किस करो बहुत अच्छी बात है. अगर आपका मिड स्कॉलर है जो कि आप कह सकते हो 8 साल से 12 साल का बच्चा है, उसको आप बीच में हग करते रहो, कम से कम 1 में 2 बार हग जरूर कर लो. क्योंकि जैसे ही बच्चा हमारा बड़ा होने लगता है ना, उसको हम हग करना छोड़ देते हैं, किस करना छोड़ देते हैं. बट दीज थिंग्स आर रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट. फिजिकल टच का किसी भी रिलेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है. सो स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स. एंड येस ऑफ कोर्स, यहाँ पे ये पेरेंट्स का कंप्लेन आता है जब मैं ट्रस्ट पे आती हूँ. तो क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो मैं ही बता दे रही हूँ ट्रस्ट का क्या प्रॉब्लम होता है. पेरेंट्स कहते हैं अगर हम बच्चे पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगे तो बच्चा कुछ गलत भी कर रहा होगा तो हमें पता नहीं चलेगा, इजंट इट. तो हम कैसे ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लें. लुक, वी आर नॉट आस्किंग यू टू ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली, इवन योर चाइल्ड. व्हाट वी आर आस्किंग यू टू डू मीन्स ट्रस्ट मोर. मीन्स जितना अपने बच्चे पे, अपने काबिलियत पे भरोसा हो, उससे कहीं ज़्यादा भरोसा आप दिखाइए. एंड यू सी द डिफरेंस. अगर वो कुछ करने जा रहा है, अरे बेटा आई नो यू विल डू दैट, बस उसको वो थोड़ा सा पुश करना और बताना है कि
दुनिया में कोई भी बोल दे तू नहीं कर सकता, मैं बताता हूँ, यू विल डू दैट, येस ऑफ कोर्स यू विल डू दैट। तो आपका जो वो स्ट्रेंथ है ना वो उसमें एडेड हो जाता है, एंड दैट ट्रस्ट गिव्स हिम मच मोर कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी, एंड यू विल सी द डिफरेंस व्हेन यू आर डूइंग दैट। आप एग्जाम के टाइम भी देख लो, बच्चा बोले मम्मा मैं बहुत डर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये चीज़ का प्रिपरेशन नहीं हुआ है। इट्स ओके बेटा, आई नो दैट यू हैव ऑलरेडी पेड लॉट ऑफ अटेंशन इन द क्लासेज, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड लॉट, जो भी आएगा मुझे पूरा पता है, तू अच्छे से लिखेगा। And you see the difference at the end, he will say that mama I have really done very well in the exam. तो ये तो सब हम लोग सबके साथ होता है, जितना ज़्यादा आप ट्रस्ट दिखा उतना ज़्यादा हम काम को इफेक्टिवली करते हैं। सो जस्ट शो मोर एंड मोर ट्रस्ट टू योर चाइल्ड, टू लेट द चाइल्ड बिहेव बेटर, मेक देम फील बेटर। तो अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा सही चीज़ करे, जो आप चाहते हो उस तरीके से करे, तो आपको वो शो करना होगा कि वाई दैट थिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर हिम। इवन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट वैल्यूज़, जैसे कुछ रिलीजन रिचुअल्स की बात करें जो हमारा बच्चा नहीं एक्सेप्ट कर पाता है, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, तो यू हैव टू शो वाई दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर हिम। वॉट एवर यू आर पोकिंग, वॉट एवर यू आर ट्राइंग हिम or her to implement, you have to show the importance of that, and yes of course later on you'll find that the child himself or herself is doing it. कि तो किसी भी चीज़ के लिए, मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, कोई भी वैल्यू आर्ग्यूमेंट नहीं करो। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि मेरा बच्चा ओबीडियंट नहीं है, हमेशा उसको क्रॉस क्वेश्चन होता है, मैं कुछ कहूँ और उसके बाद वो, उसका भी वही रीज़न है। यू हैव टू टेल योर चाइल्ड, स्पेसिफाई योर चाइल्ड कि आप जो बोल रहे हो शो करना होगा। देखिए हम लोग ना हर कोई अलग इंडिविजुअल होते हैं, ये जो बच्चों से भी हम बात करते हैं, अ फ्यू पीपल आर विजुअल, अ फ्यू पीपल आर ऑडिटरी, अ फ्यू पीपल आर काइनेस्थेटिक। तो आपको अपने बच्चे को समझना पड़ेगा कि आपका बच्चा विजुअल है, विजुअल मतलब जो देख करके बातें समझ जाता है, देख के बातें कुछ ज़्यादा समझ सकता है या आगे बढ़ सकता है उसके थ्रू, ओके याद रख सकता है देख के। कुछ लोग होते हैं जो सुन के ही सब समझ लेते हैं, सुन के याद रखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो खुद करते हैं तो ही समझ पाते हैं। So you have to understand your child and make him or her also understand that how it is better for him when he applies some of the rules or regulations that you have set in the family. Okay? और हाँ, यहाँ पे अभी मैंने शुरुआत में भी ये चीज़ कही थी कि एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो मशीन्स पे आप कर सकते हो। आप कभी कभी देखते हो कि उसके बच्चे जो हैं बहुत आगे निकल गए, उसने ये किया, ऐसा किया, इसलिए उसके बच्चे निकल गए, तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। प्लीज़ बिलीव मी डियर पेरेंट्स, दैट रूल डजेंट अप्लाई टू योर किड्स। अगर किसी एक ने अपने बच्चे पे एक एक्सपेरिमेंट किया और वो बच्चा आगे निकल गया, दैट्स नॉट नेसेसरी दैट योर चाइल्ड विल ऑल्सो डू द सेम। तो इसलिए मैंने शुरुआत में ही, ये सेशन जब शुरू हुआ उसी टाइम मैंने कहा कि देयर इज़ नो वन एल्स इन दिस वर्ल्ड हु कैन हेल्प यू इन पेरेंटिंग। ओके, वी कैन जस्ट टेल यू अ फ्यू वेज, इट्स अप टू यू, यू हैव टू फाइंड आउट दैट विच वे इज़ द बेस्ट फॉर योर चाइल्ड एंड विच इज़ गोइंग टू हेल्प हिम आउट। हाँ, पर कुछ ऐसे क्लासिकल वेज हैं जिनको हम ब्लाइंडली फॉलो करते आ रहे हैं और हमें लगता है कि वो सही तरीका है, जैसे स्पेयर द रॉड वाला आपने सुना होगा। वी विल टॉक अबाउट दैट अ लिटिल बिट, कि पहले का हमारा थियोरी था कि स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। हैव यू heard about this theory and do you believe this theory? Tell me yes or no. Do you believe in this theory? Spare the rod and spoil the child? Please tell me being honest. Do you believe in this theory? Spare the rod means अगर आप बच्चे को मार पिटाई ना करो, डांटो नहीं, तो बच्चा जो है बर्बाद हो जाएगा। Is that so in today's scenario? Yes? Am I audible? Because I am not getting any answer here. Thank you so much. Hear that, Abist? Yes, of course. In today's scenario, it is not going to work at all. हमारे साथ भी नहीं करेगा। आप किसी भी जगह पे ले लीजिए जहाँ पे आप फोर्सिबली किसी को कुछ कराना चाहो, प्रेशर के साथ कुछ कराना चाहो, या फिर येस ऑफ कोर्स यू यूज़ पनिशमेंट। सो अर्लियर, मतलब पनिशमेंट भी काम करता है जब आपका बच्चा टॉडलर है, उस समय पनिशमेंट भी किस तरह का, कभी भी हम पेरेंट्स वी नो वेरी वेल कि हमें सीवियर नहीं होना होता है, हाथ उठाने का या फिर डांटने का, जोर से चिल्लाने का, दीज ऑल थिंग्स जस्ट शो यू एज अ फेल्ड पेरेंट। ये आपके बच्चे को आप लिख के रख लो, किसी से भी पूछ लो, किसी भी ऐसे पेरेंट से पूछ लो जिनका बच्चा आज निकल गया है, दैट इज़ नेवर गोइंग टू हेल्प यू आउट। ओके, तो स्पेयर द रॉड जो है वो पहले यूज़ होता था, हम लोगों के ज़माने में कभी यूज़ हुआ होगा, बट राइट नाउ दीज किड्स डोंट नीड रॉड एट ऑल। और अगर आप रॉड यूज़ करते हो देन जस्ट बिलीव मी, यू आर क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ डिच इन बिटवीन योर रिलेशनशिप। सो बेटर बी केयरफुल एंड don't do any sort of experiment on your kids. Yes, of course dear, that is required. I hope you remember the message that you might have got where it was said that we are bequesting two things for our kids. One is their roots
that we are providing, giving them our experiences, our whatever learnings we have, the wisdom that we are providing, that is their roots, their strength. And then apart from that, we also give them their wings, which is important, which is liberty, with which they are able to find their own passion, their own world. They are able to explore it and then do better in their lives, isn't it? अभी जो ये चीज़ मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि आपका बच्चा अगर कुछ भी कहने आता है तो अपना कान दीजिए उनको, सुनिए उनकी बातों को, एंड दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. लिसन टू देम, लिसन टू देयर वर्ड्स, अप्रिसिएट देयर वर्ड्स. कभी कभी ऐसा हो सकता है, येस ऑफ कोर्स वी डू नो, कि हम लोग अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी कभी कभी इतना बिजी हो जाते हैं दैट वी आर नॉट एबल टू गिव दैट टाइम एंड एफर्ट टू अ चाइल्ड. बस थोड़ा सा, पता है, एक थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा स्माइल एंड जस्ट अ स्मॉल हग विल हेल्प योर चाइल्ड. उसको बस उतना ही चाहिए, आपका पूरा का पूरा टाइम भी नहीं चाहिए. वो भी समझता है आपकी मजबूरी को. उसको क्या चाहिए, बस एक बार थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, बोले वाह बहुत अच्छा किया बेटा आपने, अच्छा ऐसा हुआ. सो दैट इज़ ओनली वॉट योर चाइल्ड नीड्स. अगर आपने एक बार दो बार उसकी बातों का जवाब देना बंद कर दिया या कहा कि अभी मैं नहीं सुन सकती, then your child will not come back to you again. So start listening to his small pity stories as well. Then only the child will come up with the big stories for you. Okay? टीच वॉट्स राइट, रिवॉर्ड फॉर द राइट डीड्स. अभी जैसे मैंने बताया कि स्पेयर द रॉड वाला थियरी अभी काम नहीं आने वाला है. तो जस्ट स्टार्ट रिवॉर्डिंग फॉर ऑल द गुड डीड्स. अभी कैसे हम अपने बच्चे में इम्प्लीमेंट करें कि वो और अच्छा करता जाए, तो उसको पनिशमेंट देने की जगह ना, उसके करेक्शन के लिए, उस काम को अच्छा करने के लिए आप उसको कोई रिवॉर्ड दे सकते हो. रिवॉर्ड में जैसे आप उसको बोल सकते हो कि अगर आपने ये कर लिया तो उसके इंटरेस्ट की कोई चीज़ों का एक लिस्ट बना लीजिए कि आपके बच्चे को क्या क्या पसंद है, एंड स्टार्ट गिविंग काइंड ऑफ रिवॉर्ड्स इन दैट मैनर ओनली. जो उसको पसंद है वो दीजिए, बट ब्राइब की तरह नहीं, ब्राइबरी नहीं करना है, बिल्कुल भी ब्राइबरी यूज़ नहीं करना है. पीपल यूज़ ब्राइबरी वाइल फीडिंग देयर किड्स, वाइल मेकिंग देयर किड्स लर्न द थिंग. तो ब्राइबरी जो है ना, वो एक ग्रीड पैदा करता है. दैट इज़ अगेन नेगेटिव एनफोर्समेंट. ओके, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट टेल, यू कैन सेट अ टारगेट फॉर योर चाइल्ड कि बेटा आपने अगर ये ऐसा कर लिया ना, तो इस अचीवमेंट के बाद आपको ऐसा ये मिलेगा. सो दैट्स नॉट अ ब्राइब, दैट्स अ रिवॉर्ड you are getting because of your achievement, because what you said. अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो, कोई चैप्टर सेट कर दिया कि आज एक वीक में आपका ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, अगर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, आप देने तो वाले हो ही ना. एज अ पेरेंट वी ऑलवेज वांट टू गिव वॉट एवर वी कैन टू आवर किड्स. तो आप टारगेट अपने लिए भी सेट करो और उसको उसमें डिफाइन करके दो कि आई एम गिविंग यू इट एज अ रिवॉर्ड, यू आर नॉट गेटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, यू आर वर्किंग फॉर दिस रिवॉर्ड. ओके, तो इससे उसमें भी आएगा कि अच्छा ये काम से इतना, और वो फीलिंग भी अच्छी होगी. You can correlate it with your own life, with your own experiences, that how rewards help. कोई भी आर्ग्यूमेंट जो है ना, वो आपके वीक जो बॉन्डिंग है उसको वीकेंड कर देता है. तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम चिल्ला देते हैं बच्चे को और हमको लगता है कि चलो हमारा हो गया काम, बच्चा समझ गया. इट्स ऑलवेज द रिवर्स. व्हेन यू शाउट एट योर चाइल्ड एंड यू बिलीव दैट यू हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन योर चाइल्ड, दैट्स रियली अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट. आप देख सकते हो यहाँ पिक्चर में, आपको दिख रहा होगा कि हो सकता है यहाँ पे मम्मी ने चिल्ला दिया और अब बच्चे को लग रहा है कि मम्मी को लग रहा है कि मेरा काम तो हो गया, मैंने बता दिया, दोबारा ऐसा नहीं करता, देखता हूँ तुम ऐसे कैसे करते हो, देखती हूँ तुम ऐसे कैसे करते हो, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा. सो व्हेन यू आर यूजिंग ऑल दीज डायलॉग्स, you know that the child doesn't have the right now, the child doesn't have the strength right now, but once he will get the strength, and when it starts, when he will get into teenage, when he will start seeking his own identity, by that time he or she won't be able to listen to you anymore. And that's the point where most of the parents are facing difficulty today, कि वो कभी मतलब चिल्ला के समझते हैं कि हो गया अपना काम, और बाद में फिर बच्चा कभी नहीं सुनता. इसके हज़ारों एग्जाम्पल्स है, फिर जो अभी मैं उतने एग्जाम्पल्स नहीं दूंगी, बट यू कैन गेट द एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर ओन लाइफ, फ्रॉम योर ओन people around you, that how it is ruining the relation. अभी जब हम बाउंड्रीज डिसाइड करते हैं अपने बच्चों के लिए, सो येस ऑफ कोर्स वी कैन सेट द बाउंड्रीज फॉर देम. जैसे अगर हम एडमेंट हैं कि हमारा बच्चा कभी भी रात में किसी के साथ भी टाइम स्पेंड नहीं करने जाएगा, क्योंकि अभी तो कोरोना है, स्टिल वी हैव सर्टन रूल्स इन आवर फैमिली कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे फैमिली नाइट आउट करते हैं, वो पैजामा पार्टी करते हैं, वॉट एवर दे आर डूइंग, आई एम नॉट अलाउइंग यू टू डू दैट. तो हमने बाउंड्री सेट किया, बट क्यों सेट किया? जस्ट टेलिंग कि हमारे घर में ऐसा नहीं चलता है, ये नहीं होगा. योर चाइल्ड इज़ नॉट रेडी टू लिसन टू दैट थियरी. यू हैव टू प्रूव वाई यू आर इनसिक्योर अबाउट नॉट अलाउिंग योर चाइल्ड टू स्पेंड नाइट एट समवेयर एल्स. यू हैव टू शो द रिजल्ट्स ऑफ मेनी अदर पीपल हु हैव सफर्ड बिकॉज ऑफ दैट. सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट, रादर देन जस्ट डिसाइडिंग द बाउंड्री एंड टेलिंग कि आप उसके आगे नहीं जा सकते हो.
पीपल वोंट फॉलो. यहाँ पे एक और एग्जांपल अगर आप लोगों को पता हो, पनवेल में ही लास्ट ईयर लॉकडाउन से कुछ दिन पहले कुछ 3 बच्चे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स गए थे सेलिब्रेट करने. डोंट यू थिंक दैट देयर पेरेंट्स माइट हैव आस्क्ड नॉट टू द. कौन पेरेंट चाहेगा कि मेरा बच्चा वैसे जगह जाए जहाँ उसका एक्सीडेंट हो जाए? कौन अलाउ करेगा? बट व्हाई डिड दे गो? जस्ट बिकॉज दे थॉट दैट they can go like out of the boundary as well, and you know very well that 3 of them drowned. So ये cases वो भी टीनेजर में ही आएगा. जो हमारे ग्रेजुएशन लड़के थोड़ा ज़्यादा मतलब टाइम पे मैच्योर होते हैं. सो येस, दे आर ऑल्सो टीनेजर्स एंड दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट वॉट एवर दे हैव बीन सेड. तो उनको हमें एग्जाम्पल्स के थ्रू, जो रियलिटीज़ हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, उनके थ्रू एक्सप्लेन करना होता है कि आपकी ये बाउंड्री है और इसके आगे आपको नहीं जाना है. Now, what was the gist of this all thing what I have talked today in this session? For that, I will be showing you a small video, and with that video, we will proceed to the further or the winding up of this session. ओके, इससे पहले कि मैं आगे पहले तो बात करूँ 3 C's to be done, that is connection, complement and communicate. Already we have talked about all these 3 things. Now if I ask you that connection बनाने का मतलब आप क्या समझते हो, please will you please write it in the chat box. How are you going to connect with your child? कनेक्शन कैसे बना सकते हैं? सीधा आते ही कुछ पेरेंट्स की ये आदत होती है कि जैसे ही वो घर आए बच्चे से सीधा पूछते हैं कि अच्छा बच्चा कैसा बीता आज का दिन, कैसा हुआ क्लास. सो दिस इज़ नॉट द वे यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद योर चाइल्ड. एक सिंपल सा आंसर मिलेगा, अच्छा था, ठीक हुआ, isn't it? So how are you going to ask your child, what are you going to ask your child to build a proper kind of connection? Yes, soft touch, that is required, that physical touch is required. Play with them. Very good, Abhist. Yes, Abhist, I have seen him in the Spectra session as well, and the way he was telling, I guess that he has done very well in today's session in English class. So yes, of course, we need to be with them. यहाँ पे आप देख रहे हो पेरेंट चोटी बना रहे हैं, पेरेंट उनके साथ खेलते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, ड्राइंग करते हैं. एंड इफ़ यू आर रियली डूइंग द सेम थिंग विच इज़ द इंटरेस्ट ऑफ योर चाइल्ड, यू आर गोइंग टू कनेक्ट. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका जो इंटरेस्ट है आपके बच्चे के इंटरेस्ट से डिफरेंट हो, पर वहाँ पे ही आपको अपनी जो बोलते हैं ना बच्चे के साथ कनेक्शन के लिए थोड़ा सेक्रीफाइस करना होगा. यू हैव टू डू दैट थिंग, यू हैव टू एन्जॉय दैट थिंग व्हाट योर चाइल्ड एन्जॉयज़, और फिर आप देखोगे कैसे कनेक्ट करते हो. सो यू कैन सी द डिफरेंस ऑन योर ओन. जो भी आपके बच्चे को पसंद है आप उसके साथ, आप बोल रहे हो ना वीडियो गेम में या फिर इंटरनेट गेम्स में ज़्यादा लगा होता है, सो यू जस्ट प्ले दैट गेम फॉर फ्यू मिनट्स. आप बोलोगे कि उसकी जगह पे उसको पढ़ाई करना चाहिए, इट्स ओके. वीक में आप एक दिन डिसाइड कर लो कि आप उसके साथ गेम खेल रहे हो, एंड देन यू विल सी. जब उस देखो कोई भी चीज़ हम तब तक करते रहते हैं जब तक हमारी क्रेविंग पूरी नहीं हो जाती. अब मिठाई खाने की बात करो, आपको मिठाई बहुत पसंद है, आप मिठाई कब तक खाते हो? आपको हम अगर 10-5 मतलब और रसगुल्ला खिलाते रहे, यू विल बी फेड अप. नो, आई डोंट वांट. हो सकता है कि आप 10-20 दिनों तक, 1 महीने तक दोबारा रसगुल्ला का नाम ना लो. इट गोज़ विथ ऑल द काइंड ऑफ थिंग्स. हमारी एक प्रॉपर क्रेविंग होती है, एक इलास्टिसिटी होती है. तो यहाँ पे भी कुछ पेरेंट्स का कहना होता है कि वो क्रेविंग कभी ख़त्म नहीं होने वाली. दैट्स योर थॉट, दैट्स नॉट द रियलिटी. आपको ऐसा डिस्ट्रैक्शन ढूंढना है, ऐसा एक इंटरेस्ट ढूंढना है जो कि इंटरनेट के साथ compete कर सके. एंड देयर आर मेनी 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 मेनी, यू जस्ट हैव टू फाइंड इट आउट. आप ढूंढिए अपने बच्चे के साथ मिलके, उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानिए, उसके इंटरेस्ट को जानिए, एंड ट्राई टू कनेक्ट विद योर चाइल्ड बाय प्लेइंग, बाय स्टडिंग. वो जब कुछ पढ़ रहे हैं तो उस समय आप भी अपने बता दो. पता है जब मैं छोटी थी ना तो हमारे स्कूल में ऐसा होता था, ये हुआ था, उस टाइम ऐसा हो गया. एंड व्हेन यू डू ऑल दीज थिंग्स at that time you are really able to do a lot. A kind of great connection is between you. Then complimenting, that also we talked about. छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप उसको कॉम्प्लीमेंट करना शुरू करो तो वो आपसे कनेक्ट करेगा किसी से भी. अगर मैं आपको बीच बीच में आप ध्यान दे रहे होगे, बार बार मैं कहती हूँ आपने बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा किया, सो व्हेंस आई से दैट यू आर एबल टू को रिलेट. एंड डोंट यू फील हैप्पी, don't you feel good? So that's a kind of emotion which is released when we are appreciated. And as an individual, as a human, we all seek appreciation. तो हमारा बच्चा भी वो सीख करता है, and you just try to give him as much as you can. Okay, so this is what is to be done, and what is not to be done, we will do that, and then we will find out.
this also we had already done, that comparison is not good for your child. It is going to kill his uniqueness. Criticism and criticisms too in public is not allowed at all. Never criticize your child in front of anyone. यहाँ तक कि आपके अगर 2 बच्चे हैं तो आप दूसरे बच्चे के सामने अपने बच्चे को क्रिटिसाइज ना करें. प्लीज़ नेवर डू दैट थिंग. जब भी आपको क्रिटिसाइज, ये कहा जाता है कि जब आपको क्रिटिसाइज करना है तो आप इंडिविजुअली करिए, और जब आपको अप्रिसिएट करना है तो सबके सामने करिए. सो दिस इज़ जस्ट फ्यू थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू ऑल. और इसके साथ ही दैट इज़ ऑल अबाउट द पेरेंटिंग सेशन. एंड नाउ लेट मी टेल यू अबाउट आर एलन, जहाँ पे हमारे ऐसे मोटिवेशनल सेशन रेगुलर होते रहते हैं. Even in the pandemic, we were able to take such sort of motivational sessions for our child and also for our parents at times. So we are taking that. Then technical help and support we are always giving through doubt counters. Every day we have the doubt counter. Every day means 6 days a week we have doubt counter from 3 p.m. to 4 p.m. in which your child can connect with the teacher on individual basis. तो जो हम individual attention की बात कर रहे हैं वो भी मिलता है. Okay, so हम टाइम मैनेजमेंट में भी हेल्प करते हैं. उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स में वी हैव पीपल फ्रॉम, like if you talk about English department, I have been teaching Cambridge level for about 3 years at Allen only. Then there are all the other English staffs who are trained Cambridge trainers. Okay, so we deal with communication skills. We help the child to boost their communication skills. Okay, तो कैम्ब्रिज के हमारे सेशंस होते हैं वो अलग, उसके बारे में कभी आपसे बाद में मुलाकात होगी बताने के लिए कि हमारे कैम्ब्रिज के सेशंस कैसे होते हैं. और हमारे इंस्पिरेशन जो हमारे 4 भाई हैं जो एलन के ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो टाइम टू टाइम हमारे इंस्पिरेशन बन के अपना कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं हम लोगों के साथ. फिर संस्कार महोत्सव होता है. ये सब कोटा का है, बट मुंबई में भी जैसे हम लोगों के अभी तो लॉकडाउन की वजह से लास्ट ईयर वी कुडंट डू दैट, स्टिल दैट एलन फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड देयर वर मेनी किड्स हु हैव हैड अ ग्रेट सेशन इन दैट एलन साइंटिफिका, जैसे इंग्लिश अमीगोस करके हमारा होता है. और मतलब इस तरह के इवेंट्स हमारे जनरली होते रहते हैं जिससे बच्चों के साथ कनेक्शन और भी बढ़ता है. टॉपर्स टॉक शो भी ऑर्गेनाइज होते हैं. अभी जैसे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आते के साथ भी जो भी टॉपर्स होते हैं हमारे यहाँ के, वो बाकी बच्चों के साथ उनके क्वेश्चंस के आंसर्स भी देते हैं. सो अब आप पूछोगे कि इतना कुछ है एलन के बारे में, तो आप एलन के पार्ट कैसे बन सकते हो. सो येस, ऑफ कोर्स यू कैन बी द पेरेंट ऑफ काइंड ऑफ एलन चाइल्ड, एलनाइट. सो वी हैव क्लासरूम कोर्सेज ऑफलाइन और ऑनलाइन बोथ. Distance learning is also there, that if you feel that offline or online, then there is a DLP, that is distance learning program as well. उसके बाद ये इसमें एडमिशन आपका होता है ASET के थ्रू. ASET is Allen Scholarship Admission Test. So you can get admission in Allen by this test. This test के बेसिस पे उनको एक स्कॉलरशिप मिलता है. उस स्कॉलरशिप के बेसिस पे आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है एडमिशन के टाइम पे, एंड देन यू कैन गेट दी एडमिशन ओवर हियर एंड enrolled as an Allenite. Okay, so I hope to see you all here as a kind of Allenite later on, and so that we will be able to work together with our kids who will be joining later on. Okay, लास्ट में पहले तो मैं आप लोगों से पूछूंगी कि कुछ भी ऐसा जो मैंने नहीं बात की हो जो आपको लगता है ऐड करना चाहिए, you can just leave it in the chat box so that in our next session or whenever we have such sort of session we'll be doing that. As a parent, you need to remember a few things that I have summarized at the end. Help them to imagine and dream. Let them do their works on their own. Let them learn, unlearn and relearn. All the things are important. Love them unconditionally without showing any condition. अगर तुम जीतोगे तो ही मैं प्यार करता हूँ. You have to show them that in any condition, in whatever kind of result your child is bearing, you are there. वैसे भी हम हैं ही, तो उनको ये जताना है, show करना है that we are there in every situation for you. Show them the value of values through your examples. Share your failures and achievement and ask them to share their daily learnings. Okay, so I hope that I am loud and clear over here, and if you have anything that you want to share, you can share. But before leaving, there is one more thing. Before you leave this session, I would request you all to share your feedback of whatever you have come to know about Ellen and this session that we had for almost 1 hour. Krishna beta, please, whoever it is, whether it's the child or the parent, you are showing us the sound of crackers. Yes, good. Because of course we have winded up this program, so that was a good thing. But I would request everyone to share your feedback, which will be important for us for our further sessions if we are organizing. So whatever you want to convey, please write it in the chat box. Yes, our mentor, coordinator ma'am, Ranu Soni ma'am is there. So I will ask her to say something if she is. Yeah, very good evening everyone, and I really want to thank you to get some time
for your kids. This session was basically about parenting and about knowing Alan. So you have taken your time to listen to us. And over here, I would like to tell if you have any queries regarding Alan, if you would like to know anything about Alan, we are here to answer this. So any person would like to ask any questions, you're most welcome. आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन हो जो आप जानना चाहते हो एलन के बारे में, हम यहाँ आपके एलन के सारे क्वेरीज रिजॉल्व करने के लिए हैं. सो प्लीज़ आस्क इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स और क्वेरीज रिगार्डिंग एलन. अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एलन से जुड़े या इस तरह की कोई भी क्वेरीज है जिस तरह के हेल्प आप हमसे एक्सपेक्ट करते हो, सो प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन. Madam, can I ask one thing? Yes, sir, sure. Suppose I take online classes. So how the child will interact with the teacher one-to-one? If any doubt, yeah, if he want to meet, so he can attend through offline session in the classroom also, or is there only through online only? Okay, I would like to give answer to this question, sir. If any student is enrolled with us in the online course, we will provide them classes and even the doubt counter, about which Anupam ma'am already mentioned. What is doubt counter? Doubt counter is a special session which is conducted every day from 3 to 4 p.m. where teachers are available online and kid can join the Zoom meeting and discuss anything regarding studies, about their timetable or any other thing with the teacher. Apart from that, once the situations will improve and we will be starting working at the center rigorously, then student is allowed to come at least once a week to meet the teachers or to come for the doubt counter physically. Even those students who are enrolled in the online courses, they can come once a week at the center as well. Correct, because online they can study, but the doubt through online for the kids is very difficult to understand, if I am not wrong. Sir, So I would tell you one thing about it. Right now, we are running a demo e-doubt counter session for the kids who are not associated with us till 5th of April. You can take an experience. We can connect you with the admin team, and whether they have any doubt, let's see how teacher resolve it during the e-doubt counters. So you will get an idea how we do it one-to-one. So we No, are already doing with this. it's okay till the situation will not come normal. Then till online is okay, and after that, if it is you are allowing for a 1 day in a week for the offline, then Yes, that sir. is also a good for childs. Definitely, Thank it you. will be done. Yeah, sure. Yeah. Okay. Thank you. Hello. One question I would like to say is that if I have taken the online classes, suppose later on the COVID situation is improved or later after 6 months, online offline classes are started. Whether we can switch over? Yes, sir, you can switch over. There is a process by which the course change can be done. But yes, there are some charges for the change of course, and whatever fee difference between online and offline will be there, that is to be paid. That's it. Otherwise, you can definitely change from online to offline. Whether one more thing, my kids is in the Ryan International School ICSC board. Yes, sir. Your classes is also covering the syllabus for this, for which I will take the admission. Which class online. he is in? Right, he is going on 9th. Yes, sir. So class 9th, class 10th, both ICSC board, we are covering the entire board syllabus. So, we have majority of Ryan students with us. So we make sure that we complete the entire syllabus along with the school exams. So you need not to worry about that. Okay. Thank you very much. Most welcome. This is applicable for all classes, either only for 9th and 10th you are talking, ma'am? Sir, for ICSC, we are running with only 9th and 10th. For CBSC, we have it from 6th to 10th. No, why I'm asking this question? Because my child is currently in 6th. So next year, this coming from April onwards, he will be studying in 7th. Okay. So your course module will including the course syllabus also, na? We will be taking
NCERT curriculum as the basis in class 7th, and we will be preparing them not only for the school exams, but we will prepare them a little ahead so that they can compete in the private Olympiads like NSO, NSTSC, and many more. So in the class 7, the basis is the NCERT curriculum plus a little. Okay. Any other question? Anybody wish to know more? I just wanted to know, do you have any, offline classes? I was just informed there are some offline classes going on in Kharghar because the batch size is sufficient there. So even in Nerul, if you could do that, because online classes, anyway, the online school classes are there and the children are already not having the face-to-face interface with their own class teacher and their subjects. So there, anyway, the parents are supposed to, supervise and do all those. So this will be really helpful if you could keep some crash courses or something like, which you could do in Nerul also with small batch size, same as you're keeping in Kharghar, because Kharghar alien is having offline classes. Ma'am, even in Nerul, we have many offline batches. There are some specific classes like class 6 and class 7, we have offline class. Sorry, your voice started echoing. I couldn't hear you properly. For class 6 and 7, you said something. Yeah, even I can experience that. Am I audible clearly now? Yeah, ma'am, I was saying in Nerul as well, we have offline batches. Only for few classes like class 6 and class 7, we do not have offline batch at Nerul. Otherwise, for 8, 9, 10, we have offline batches. Yeah, so I was talking about 7th ICSE because my son will be going in the 7th standard, and I'm actually looking for basically for 2 subjects which, I want him to improve is maths and English. And maths is such a subject that you cannot do it. I mean, you get irritated doing online. I mean, you need someone, and English also the same, because you need to improve your speaking powers. And English and maths are the foundation for any subject, whatever we are doing today, science, be it anything. So for these 2 subjects, if you're having any offline classes, if other parents are also willing, I'm ready to put my son in that classes, especially during this vacations, May and whatever, because anyway, people are not going anywhere. So for but in the current scenario, it is not advisable to us to run any of the offline batch right now. Even from the 5th April, when we are starting with our session, we will be starting all the classes online. Till the situation does not improve, we cannot take a call to ask students to come to the center and attend the classes. That is not at all advisable, and we are instructed in the similar way from our head office as well, that do not call the students at the center right now for the safety reasons. So once the situation will improve, we'll surely work on it. And let's see what all offline batches we would be able to offer. We'll contact you too. Okay, because we also are looking for a reduction in screen time. So only few selected subjects we would like to, some parents would like to just say, okay, maths and English we'll do online. Till the situation. Like for class 7th, we will be offering not only maths and English, but it will be a combination of all the subjects which we teach. Especially we take mental ability and logical reasoning as a subject as well. And if I talk about the screen time for class 7, that is only 2 hours a day. And that is also 3 days a week, not daily. So the course is designed in such a way. I understand that the screen time, they are also experiencing it with school. But yes, in the online, it is only 3 days a week, 2 hours every day. So, and the subject will be maths, English, SST, science. In science, we teach physics, chemistry, biology individually, not as a science one subject. So that's duration. Sorry to interrupt you. What will be the duration of this? Ma'am, it will be 2 hours per day. The entire curriculum is going to be for the full year? Yes, ma'am. We will be starting it with on the 5th of April. And we usually take class by the end of January. But in between, we give some breaks. Like for the summer, we give 15 days break. For the Diwali, we give 6 days break. In the winters as well, we give 4 to 5 days break. Otherwise, we teach till January end.
The So that syllabus- means the school which is making them study for the ICSE syllabus, that is different than that what Ellen is teaching for ICSE 7th standard. So Ma'am, we do not have ICSE 7th batch with us. In the 7th, we will be taking the curriculum of NCRT. Along with NCRT, we will be preparing them for Olympiads. There is no specific batch so for that was ICSE the point 7. I was coming. It would be difficult for the child to attend a 6 hours online Zoom class, and then again 2 hours Allen, which is based on NCRT, not the ICSE syllabus. Yes, ma'am. For ICSE, we do not have a specific batch for class 6, 7th, and 8th. For 9th and 10th, as the curriculum is quite huge and the topics are very much different than the CBSE, we have individual batches. But there are many students who are actually focusing about learning new things and fighting for the Olympiads. They join us for the 6th and 7th from the ICSE board. Still, if you think we can talk more about it whenever you feel, individually we can have a session, ma'am, about this for more clarity of our course. Yeah, ma'am, I got it. Actually, the practical problem is the child spending 6 hours of ICSE syllabus, then NCRT syllabus, and at a young age, so much screen time for the entire year. So I got your point, ma'am. If you yeah. will compare the syllabus of ICC 7 and CBSE 7, you will discover the maths and science are not very, very different. It is all about building the concept and understanding the subject. But yes, from looking from the student's perspective, attending so much of screen time could be an issue, but let's see how we can balance it once the offline resume. If anything is possible, I would surely inform you, ma'am. One question, ma'am. In Yes. the online courses for Mumbai, I'm seeing the two column courses is offered. One is a PCNF and another is EPCNF. I could not able to understand the differences between them. PNCF and EPNCF? No, only PCNF and another is for online and another is EPCNF On the for online website. classes. Okay. So maybe slightly different, PCNF and EPCNF. Okay, so PCNF is nothing, no term connected with us. PNCF is the term which we use. PNCF. Okay. That sorry to No problem. Yeah, so in PNCF, the P and N, it refers to pre-nurture. Pre-nurture we call is at class 6, 7th and 8th. CF is the career foundation, which we call for the class 9th and 10th. So there are two types of courses available, PNCF offline and PNCF online. So we call PNCF online as ePNCF. Okay. Yes. But I have just inquired about this only. If it's PNCF, in that admission we can take right now. Whether courses are already classes are started for this part. So we will be starting it on 5th of April. Admissions are going on. Yeah. For so class 9. Yes, sir. From 5th of April, it will start. Okay. Thank you. Thank you. Anybody else would like to ask any question about Allen or our system? Yes, ma'am. So we have a test tomorrow, right? One of the tests is planned for tomorrow. Absolutely. So I'm not sure if the details are being shared, but what would be the procedure? When we would get the result, or how would we know if the admission is there, and what would be the process ahead? Okay, once your kid will appear for the test, it will take hardly 2 to 3 days to get the results, and one of the representative from our end will be calling you in order to inform you about the result and the details. You will be receiving an SMS as well with the result or the performance. Accordingly, you can contact us and you can get more details about the admission process. Okay, ma'am. Okay. Because the classes are starting from 5th, and I think we have a lean week next, right? So we have quite a few holidays which are planned for next week, public holidays. That's the reason I wanted to understand, the overall pace of the admission that we are going to have after tomorrow's test. Yeah, after tomorrow's test, it will take hardly 2 to 3 days to get the result, and by mostly by Wednesday or Thursday, you'll get a call from us as well. Okay, so it would not be the immediate declaration because it's MCQ, right? So we would not get the results on the screen immediately. Like result is definitely obtained
But yes, the scholarships are to be allotted from quota itself, and that's why it takes a little time to reach us. Okay, ma'am. Okay. Yeah, But the marks we would get to know on the screen from that after the test itself, right? ma'am, you will get to know about the scholarship. If in case you need to get the marks, you want to know the marks, you need to tell it to our representative, our executive, or the counselor who will be calling you. They will arrange the subject-wise marks for you. One Okay, ma'am. suggestion Okay. from Thanks, ma'am. one suggestion Yes. from my side. Since I have got the syllabus for this exam, this Right. is totally a CBSE pattern exam. My kid in the ICSE. Right. Problem is that many subject subject is not matching with that. Still, I have enrolled for the exam. I can understand it in such a situation. Hardly 30 or 40% we can get it. Okay. So that is not in the running condition. So Correct. based on that, if we are thinking that a scholarship, anything that will not, that is not the expected result. So my suggestion is that this exam should be based on the CBSE as well as the candidate who was in the ICSE board. Both exams should be different, so Sir, that we can correctly we find out what is the meritorious of the students. Correct, sir. But I would like to mention that it is not the CBSE board on which the paper is based. It is the NCERT curriculum. Like if you will check, there are many boards, even the state boards, who are following the NCERT. I can tell you about the Rajasthan and Gujarat boards. They are following NCERT. So the paper which is designed, it is based on NCERT, considering all the boards. I understand ICC doesn't follow it, but if you will check any other competitive No, exam which is no, conducted. I understood the madam. Still, my suggestion is that if it is for ICSE board, the syllabus is slightly ahead. Whatever the syllabus I have seen, that is already 1 year or 2 year behind the requirement. CBSE board mein that syllabus is already right now, and that ICSE board already covered all the 2 year back. So a student don't feel ki I will go and read those things. So this is very difficult. My suggestion for ICSE exam and CBSE, though both the exam you both syllabus, you take the exam on based on the board like that. Sir, I'll take this suggestion and I will surely forward it to quota so that we can take care of it next time. Let's see if it can be done or not. I'll surely take this suggestion. Yeah, ma'am. Even that I am enrolled. I understand 100% ki we are not going to get the result what is expected for the scholarship. But still I have enrolled. That is another matter. Okay, so thank you. But I assure you, once you will associate with us, we will try to provide the best academic from our end. Okay, madam. Yeah, ma'am, similar lines for the examination, right? So I could enroll it last week, but I think, let me tell you, I think if we can have a pattern or if we can have a syllabus or a scope defined for the kids to go through, I was told the subjects on, through which, or the, across which the exam would come, and the sample paper to go through, which is there on the website. But I think if for such exams, we can have the scope also defined, right? So these are the, 10 chapters, or these are the 10, different, things that you can go through, to clear the exam, which covers probably a 70% or 80% of the coverage of NCERT important things, right? I think would help, anytime, right? Working towards a definite scope definitely helps, rather than just thinking on what can come, across all over the world, which you have done till now. No, ma'am, it is not like that. I think it is already mentioned on the website as well. For example, for a particular class, a student is appearing for the ASAT. Then there is a prescribed syllabus that what all chapters from which the questions can be asked, it is already given. No, ma'am. I, at least to me, it was not shared.
even asking for a multiple times, and tomorrow we have a test now. But at least to me, it was not shared in your website. The information that I see, if you talk about, if you have to go through what is there on your website, let me tell you, the price that you show, the rate that you show on your website is quite different from the rate that was shown to me when I met personally. So I don't know if the information is also updated on the site. So if you have to go by the site, then we have to go by everything which is there on the site. Else we have to follow what the people at the offshore center are sharing with us. So at least to me, it was not shared that we have this syllabus or this course that we can go through. I was just told the subjects, and I was just told the sample paper that I can go through. And then, the other things on the rate perspective and all, which I was told that, I need to follow. Okay, Renu ma'am, I would arrange a call back immediately after this session. Could you please tell me the name of your ward? Yeah, it's Vihan Nangia. For which center? It is Nerul Center, ma'am. Okay, ma'am, I'll arrange a call back immediately after this session for more clarity, because as you are telling about the difference in fees and all, so on the website, you need to select the correct center to get the same fees as it is informed to you. Like for the other centers of Allen, there could be different fees. So I need to make it clear, and I will arrange a call back just after this session. Okay, ma'am. And about the syllabus also, ma'am, then it will, if I mean, I think there needs to be then more guidelines, because tomorrow we have a test and I did not know that there was a specific curriculum to go through. Ma'am, you will get the specific curriculum as well on that call. I'll arrange it for you. Don't worry. Okay, ma'am. Thank you. Any other query, anything else people would like to know about our system, how we work, what about the academics, anything? There are so many things we can discuss about Allen system. But still, if any specific question you people have, you're most welcome. Otherwise, we can close the session. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thanks, ma'am. Thanks for the informative sessions and for your patience for the queries. Thank you, ma'am. Thank you for attending and giving your precious time. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Madam, I have a question. Yes, hello, sir. Please. Yeah, please. Madam, my daughter is presently studying in standard 8. Just promoted to standard 8. We are living in Kamote, so we have visited Ellen Khargar center, and we have planned to enroll for classroom program from 9th onwards. Okay. So to take the admission from 9th, what will be the schedule, earliest schedule for the admission exam, madam? Maybe in next November, December, or we have to be in touch with Ellen Khargar. Okay, so you want to enroll your kid for session 2022, right? If I understood correct. 9th standard, yeah, CBSE. Okay, sir, I would suggest you to stay in touch with us by the month of August itself, because there is one Olympiad which we conduct. It's an internal exam of Allen that we call as Talent X. Okay. It's a national level exam. Definitely, we are looking for talented students and we reward them. But it is also a scholarship test for taking admission for the next year. Okay. So so usually it is conducted in the month of September to October, and syllabus of the current class is asked and the previous class is asked. Okay. Of good level, Olympiad level. So if your ward is appearing for this and perform well, then whatever scholarship will be given, that scholarship will be applicable on the current year fees, not the new fees. Means on a reduced fees, you can avail that scholarship and can take the admission by the month of December itself. Okay. Sure, ma'am. Thank you. Yeah. Ma'am. Yes, sir. Ma'am, the one doubt I have enrolled for the ASAT exam. I get the result and I am currently in 9th and going to 10th. So from 5 April the classes are starting. Then the classes will be online or offline? Right now we will be starting with online only, looking at the current corona situations. But once the situations will improve, we will surely commence with the offline as well.
Okay, So ma'am. right now from 5th April, online classes will start. So if you have not enrolled for the ASET yet, you can still do it. We have more dates. Like after tomorrow, I think we have it on 4th of April as well. No, ma'am, I So on have 4th of enrolled. April, I you got can. the result. Okay. You have already given it. Fine. So you can start attending the classes from 5th of April. Okay, ma'am. You are in CBSE or ICSE board? Ma'am, I am CBSE studying in Kendriya Vidyalaya ONGC Panvel. Okay. So definitely from 5th April, you can attend the classes. We will inform you, we will call you. One mentor will be assigned to you who will take an orientation session before 5th of April, where that mentor will inform you that what will be your class dates, days, and what will be the timings, what teachers will be teaching you. Everything about Alan will be informed by that mentor to you before 5th of April. And from 5th of April, your classes will start. Okay, ma'am. Thank you. Most welcome. I hope there is no more questions or queries. So Anupam ma'am, I think we can close this session. Thank you, Anupam ma'am, for the wonderful session. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Yeah, thank you. Bye. Thank you, everyone. Thank you so much. Yeah. Thank you very much, ma'am. Thank you so much, ma'am.